Next we have is feature number 8, the salient feature of Indian Constitution, and that is fundamental rights. So part 3rd of the Indian Constitution guarantees us 6 most important fundamental rights. हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तीसरे पार्ट में आता है, और ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें 6 डिफरेंट तरह के फंडामेंटल राइट्स देता है. बेसिकली अ ग्रुप ऑफ 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स. नाउ just for your reference, if you want to understand more in detail about every fundamental rights, every article more in detail, then I have already done the video. I have already uploaded tutorials on every article on my channel. I have already uploaded all the videos directly related to all the fundamental rights, covering every fundamental rights more in detail, and I will give the description of all those fundamental rights in the description box below. So students, if you have time and if you want to learn more in detail about these fundamental rights, then please go to the description box below and check out all the fundamental rights which I have uploaded for you all. So meanwhile, what I'm going to do right now is that I'm just going to briefly talk about what are these fundamental rights and what exactly these fundamental rights are all about. आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बहुत डिटेल वीडियोस बनाया है. हर एक फंडामेंटल राइट्स को बारीकी से कवर अप किया है, और वो सारे जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सारे फंडामेंटल राइट्स को बारीकी से समझना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उन लिंक पर क्लिक करके आप ये ट्यूटोरियल पा सकते हैं. तो फिर इस ट्यूटोरियल में मैं संक्षिप्त में और इन शॉर्ट में इसको प्रस्तुत करूँगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा. तो फिर चलिए शुरू करते हैं. द फर्स्ट ग्रुप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दैट इज राइट टू इक्वालिटी. नाउ दिस फंडामेंटल राइट्स आर कवर अप इन अंडर फॉलोइंग आर्टिकल्स सच एज आर्टिकल 14, 15, 16, 17 and 18. So there are 5 different articles which basically talks about different forms of equality, different types of equality. So as I have already mentioned you all, please go to the description box below and check out the group of right to equality. Right to equality जो है ग्रुप है फंडामेंटल राइट्स का, इस ग्रुप में 5 हमारे बहुत इम्पोर्टेंट राइट्स आते हैं, और ये बेसिकली आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 में उनको डिवाइड किया गया है. और जैसे मैंने बोला, अगर आपको इसके बारे में और बहुत कुछ जानना है तो प्लीज़ उन ट्यूटोरियल्स को देख लीजिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है. सो दिस इज अबाउट राइट टू इक्वालिटी, व्हिच बेसिकली टॉक्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वालिटी एंड द रीजन व्हाई वी नीड टू हैव इक्वालिटी. सेकेंड ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम, एंड दिस राइट टू फ्रीडम इज बेसिकली कवर्ड इनटू various other articles, example article 19, article 20, article 21 and article 22. So 4 different types of freedoms are mentioned in our fundamental rights, and these fundamental rights are very basic fundamental rights which every citizen of this country must have for his or her own development. दूसरा जो ग्रुप है वो राइट टू फ्रीडम को बयां करता है, और इस राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत 4 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर किए हैं, जैसे कि आर्टिकल 19, 20, 21 और 22. फिर एक बार बोलूँगा कि अगर आपको इस आर्टिकल के बारे में बहुत कुछ जानना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक बार फिर चेक कीजिए. देन वी हैव थर्ड ग्रुप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दैट इज बेसिकली राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशंस, एंड हियर अंडर दिस article we have 2 very important fundamental rights, that is article 23 and 24,
and these rights basically talks about how people have been exploited and why we should not exploit them, and how one can defend his or her right of not getting exploited. So this is basically talked about that exploitation of human beings are bad, especially in the name of caste, color, creed, or even gender for that matter. And therefore this article helps every individual of stopping those exploitation and protecting his or her own identity. तीसरा जो ग्रुप यहाँ पर दिया है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बयां करता है, और इस आर्टिकल में इस ग्रुप ऑफ फंडामेंटल राइट्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर किए हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। और इसमें जो अमूमन सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके अगेंस्ट लिखा गया है कि इस एक्सप्लॉयटेशन को हम कैसे स्टॉप करें। अगर कोई भी आपको एक्सप्लॉयट करता है इन द नेम ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, कुछ भी हो, तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको उस आर्टिकल्स में मिल जाएंगी। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड अंडर दिस ग्रुप ऑफ आर्टिकल देयर आर 4 very important fundamental rights: Article 24, Article 25, Article 26, Article 27, and Article 28. All these 4 articles basically talks about the freedom of religion, that every individual, whichever faith you may belong to or whichever religion you may belong to, you have all the freedom to practice and worship as well as to propagate your own religion. So that amount of work has been carried out in these articles, and it covers extensively all the current issues what we have when it comes to the freedom of religion and how one can defend his fundamental rights. चौथा जो ग्रुप है वो बेसिकली फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कवर करता है, और इस फ्रीडम के रिलेटेड 4 आर्टिकल इसमें लिखे गए हैं, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। तो ये चारों आर्टिकल बेसिकली टॉक्स अबाउट कि हर एक इंसान को अपनी आज़ादी है कौन से भी धर्म को फॉलो करने की, कौन से भी रिलीजन में बिलीव रखने की या वे ऑफ वर्शिप की। कोई भी आपके रिलीजन में इंटरफियर नहीं करेगा। सिमिलरली हर एक बंदे को अपना रिलीजन प्रमोट करने की भी आज़ादी है। तो ये सारे जो मुद्दे हम देख रहे हैं हम हमारे अगल बगल में या आसपास रिलीजन को लेके, तो आई थिंक वी मस्ट लर्न दीज बेसिक फ्रीडम्स विच वी हैव गिवन इन आवर ओन फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो basically talks about cultural and educational rights, and these group of cultural and educational rights are covered into 2 very important fundamental rights, that is Article 29 and Article 30. And these fundamental rights talks about how and why should everyone protect his or her own culture, language, ethnicity, and definitely it talks about that education rights are very very important, and therefore under these fundamental rights every community, every ethnic groups have their basic fundamental rights to protect their own culture and to have education institution to propagate education to all. So this is a very important group which is cultural and educational rights. पांचवा जो बहुत important फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर ये है कि ये जो ग्रुप है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स का, ये आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में कवर करता है। इसमें बेसिकली वो आपके कल्चर के बारे में लिखा गया कि हर एक इंसान को अपना कल्चर बचाने का और उसको प्रोटेक्ट करने का और उसको प्रमोट करने का अधिकार है। ये उसका बेसिक फंडामेंटल मूलभूत अधिकार है। जैसे कि आपकी कोई भी एक लैंग्वेज हो, आपका कोई भी एक फेस्टिवल हो या कोई भी अदर कल्चरल एस्पेक्ट हो, वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एक फंडामेंटल राइट्स है। सिमिलरली आप कौन से भी एथनिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपको अपनी खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का भी अधिकार है और एजुकेशन को प्रमोट करने का अधिकार है। और ये सारे जो अधिकार है ये आर्टिकल 19 और आर्टिकल 30 में लिखा गया है। और जो लास्ट जो ग्रुप ऑफ आर्टिकल है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एंड दिस इज कवर्ड अप इन आर्टिकल
32. Now right to constitutional remedies is one of the most important weapon, I would say, which every citizen has to protect himself as well as herself from any intervention by a state or an institution in your personal life. It is one of the most important assets which is given to every individual. And here it basically talks about habeas corpus, certiorari, mandamus, and various other important concepts wherein how an individual can protect himself from an indiscriminate use of power by any state or any institutions against a particular human being. Just to give an example, that if someone comes and arrests you without arrest warrant, then what you would do, what your family would do, whom they would approach. So this is an remedy which is given to those people, that if there is unwanted force being used against you, then you can approach to the High Court, you can approach to the Supreme Court to protect your own human rights. Example, habeas corpus. You can always put a writ petition in the High Court asking High Court to take your matters immediately under the habeas corpus. And we have seen a lot of examples which are happening around our country. And therefore, this group of fundamental rights, right to constitutional remedies, is your real defender of your equality, liberty, and more than that, your freedom. लास्ट जो ग्रुप ऑफ फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये जो आता है वो आर्टिकल 32 में आता है। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी इंडिविजुअल सुरक्षा के लिए। कभी भी कहीं पर भी अगर स्टेट मान लो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन आपके ऊपर ज़बरदस्ती करती है तो आपको ये फंडामेंटल राइट्स उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा। और इसीलिए इसके जो कॉन्सेप्ट है जैसे हेबियस कॉर्पस, सर्टियरी, मैंडामस, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए हर एक स्टूडेंट को ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है और फंडामेंटल राइट्स क्यों है। और ये जो सारे फंडामेंटल राइट्स है, दीज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। That means if anybody violates your fundamental right, you can bring it to the court of law and you can fight for your own rights. So this is all about the eighth salient feature of the Indian Constitution, and that is fundamental rights. And as I said, if you want to know more about this in detail, then please go to the description box below and check out all the links which I have given to every fundamental rights. So this is all about the fundamental rights.